So in previous class we have completed bed, graded bedding, cross bedding. There are also different type of bed in koi pariyo. देखिए ripple. So ripple in simple you can say wavy undulation on sand surface. So basically sandstone रे देखा जाए sand surface रे जहाँ wavy undulation आसियो ताको हम कौन थी का that is called as your ripple. So wavy undulation on sand surface that will be called as your ripple. So हमें direct जीवा there are two types of ripple. Two types of ripple. Dira type of ripple अच्छी. One is called as your current ripple, another is called your wave ripple. गोटे हम कहते current ripple, गोटे कहते wave ripple. So ripple गुरा सब जगह पूरा smaller height था इतना को. तुम्हें up to 10 to 15 centimeter पर्यंत height पाएगा का ripple रा. ताकि अधिक जो दिख पाएगा ताले हमें ताको dune बोले के. So dune also similar way produce way, but it is larger than the ripple. Simple तुम्हारा dune basically हमें separately पढ़िया के चाबो सकता नहीं. जहाँ तुम्हारा ripple produce way, ripple larger form हवा dune. तो हमारे इटी basically दीटा ripple ऐसे हो current ripple कोटे wave ripple कोटे. So first हम देखिए current ripple जैसे. This is a current ripple you can say. This is a current ripple. So first we'll see current ripple. So this is a current ripple. So it is asymmetrical in nature. Asymmetrical in nature. First thing, it is asymmetric. So you can see draw a diagram here. So this is asymmetry. This is the current flowing direction. This is the current flowing direction. You can find series of ripple like this. So this side is called as your stoss side. This side is your lee side. This is common. So the stoss side and this is your lee side. So the stoss side here in case of asymmetrical ripple, stoss side is gentle and lee side is steeper. It is also the case of your dune. Lee side steeper पाइबा, stoss side gentle पाइबा. So and current flow from the stoss to lee side, stoss to lee side को current flow करियो. बैठी हम जैसे देखिबा, this is called as your crest, this is straw. जो बड़ा हमें गोटे wave रे different terminology use करते, इठी भी सेवला हमें different terminology use कर परिया. तो दीटा consecutive crest भीतर जो distance ताको हमें नहीं परिया wavelength. तो इठी हमें इटा को नहीं परिया wavelength. इटा तुम्हें height नहीं परियो, right? जहाँ तुम्हें wave रे term use करचो से अनुसार use करो. So it is an asymmetrical ripple. So asymmetrical ripple basically they are produced by unidirectional flow. तामाने river हो, stream हो, ये सब जो को produce हुए. जो उठी current टा गोटे direction में flow करतो, से जगह तमें asymmetrical ripple produce पाइबो. So इटा produced by unidirectional flow. So unidirectional flow जो produce हो बेटा, ता सहित और जो crest अच्छी, this is the crest part, this is the trough part. Both are rounded. Both crest and trough are rounded. So both crest and trough is rounded. So here you can see because of this asymmetry nature जो हमें जानी पारिबा जे कोटे कोनसी जगह रे करंट रिपल थिबा त हमें जानी पारिबे से को डायरेक्शन ने
फ्लो कर. So that's why it is used as paleo current indicator. तामाने जो जगह रे तुमरा पाइबो तुम्हें गोटे करंट रिपल तुम्हें ताकू ता थ्रू रे तुम्हें जानि परबो जे ए जगह रे करंट पाड फ्लो करता. तो ऑब्वियसली तुम्हें यदि स्टॉक साइड ली साइड डिटरमाइन करि पारलो ताल तुम जानिबो जे स्टॉक साइड टू ली साइड आड को करंट फ्लो करता. Or you can say dipping direction of the lee side. And it is जेहेतु तुम्हारा राउंडेड क्रेस्ट राउंडेड रो अछि याकू एमती रखले तुम जेम देखाबो उल्टी की रखले भी सेम देखा. तो सेत पे इट cannot be used as top and bottom criteria. So top and bottom criteria पे तुम यूज कर परिबो नाही, because both the crest and trough are rounded. Reason is कौन? Both crest and trough are rounded. That's why it cannot be used as top and bottom criteria. बुझिला तो इटा होची तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट रिपल. तुम्हारा रिवर हो स्ट्रीम फ्लो हो गोटे सिंगल डायरेक्शन जेतले फ्लो होची से टाइम रे हमरो ए सब रिपल प्रोड्यूस करंट रिपल. So current ripple, it is mostly तुम्हारा entrance level ले जा क्वेश्चन पर it is used as paleo current. It cannot be used as top and bottom criteria because it has rounded crest and rounded trough. तुम्हें ताकू माने तुम्हें सीधा देखले जेमती उल्टी की देखले भी सेमती देखाबो. तो जो जिनसटा को तुम्हारा टॉप साइड और बॉटम साइड में डिटरमाइन नहीं करि परिबेन ताला हमें ताकू यूज करि परिबानी टू डिटरमाइन द टॉप साइड और बॉटम साइड ऑफ ए बेड. Here comes to wave ripple. So wave ripple, it is a symmetrical ripple. एमती हमें देखते इटा हूँ wave ripple. ठीक है. It is symmetrical in nature. So wave ripple इतने क्या जाए it produce in marine condition. एरा कोड मिले और marine environment रे मिले. एरा found in marine environment. यदि हमें करंट रिपल देखछंती दैट इज यूनिडायरेक्शनल. करंट रिपल टा कोन थला यूनिडायरेक्शनल थला, बट वेव रिपल इट इज बाई डायरेक्शनल. तो इट एमती करंट फ्लो. तो जेहेतु एटा बाई डायरेक्शनल तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज पाइलियो करंट इंडिकेटर. तो एटा पाइलियो करंट इंडिकेटर हिसाब रे यूज करा जाए नाही, बट इट हैज sharp crest and rounded trough. तर कौन था शार्प क्रेस्ट है राउंडेड ट्रॉथ है. तुम्हें देखो क्रेस्ट पार्ट है कि पूरा शार्पर अच्छी ये पार्ट राउंडेड अच्छी. तो सेटा इंडिकेट करिवो कोन कि इट कैन बी यूज्ड एट टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया. तुम्हें आकु जदी मु एटा होची प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन जोटा कि एटा तुम्हें टॉप साइड जाउछ एटा बॉटम साइड जाउछ. यदि करंट रिपल को एमती रखी ताल भी तुम जान दिस इज द टॉप साइड, एक्चुअली टॉप साइड ऑफ द वेव रिपल, दिस इज द बॉटम साइड ऑफ द वेव रिपल. एटू जना पड़े जे कौन है एटा उल्टी जाइए. तो टॉप साइड सब इंडिकेट करे यंगर को, बॉटम साइड सब इंडिकेट करे ओल्डर को. तो से अनुसार आम जापर कौ साइड ओल्डर कौ साइड यंगर ऑफ ए बेड. सो से जदि जेहेतु शार्प क्रेस्ट अच्छे राउंडेड अच्छी इट इज यूज्ड एज टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया. So current wave ripple it cannot be used as paleo current indicator. But it is used as top and bottom criteria. सो टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया पे एटा यूज करा जाए, बट पाइलियो करंट पे एटा यूज करा जाए नहीं. सो वी कैन आल्सो डिराइव द डिफरेंस बिटवीन ए करंट रिपल एंड वेव रिपल. सो फाइनली हमें जो रिपल रो गुटे हमें कैलकुलेट करंती ता कोनते रिपल इंडेक्स. वेवलेंथ divided by
wavelength divided by height. So wavelength of a ripple divided by height, it is a, you can say, ripple index. Ripple index. हाँ, आउ गोटे इम्पोर्टाट जिनिस होची कि द इन केस ऑफ वेव रिपल द क्रेस्ट आर बाइफर्केटेड. तुम यदि क्रेस्ट देखिबा तुमर वेव रिपल 3D रे देखले एमती आसीबो. सो ये जो क्रेस्ट गुरा कौन होता है बाइफर्केट होता है. इट इज ए इम्पोर्टेंट फील्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव रिपल. सो ये तुम्हें ऐड कर दे परिबो बाइफर्केशन ऑफ क्रेस्ट. बाइफर्केशन ऑफ क्रेस्ट. सो क्रेस्ट बाइफर्केट है कि प्रोड्यूस हमारा जो रिपल अच्छी बोथ वेव रिपल हो कि करंट रिपल हो ड्यूरिंग माइग्रेशन दे प्रोड्यूस क्रॉस बेडिंग. मुझे देखिए कि क्रॉस बेडिंग बेले मुझे कही कि वेव रिपल बा करंट रिपल वेव रिपल माइग्रेशन ने तुम ह्यूमोकी क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन हम जोटा कि स्टॉर्म कंडीशन में प्रोड्यूस हुए बाय माइग्रेशन ऑफ वेव रिपल. करंट रिपल ऑल अदर टाइप ऑफ होजी करंट रिपल हम. सो देखिए हमें रिपल माइग्रेशन. तो गोटे रिपल जो प्रोड्यूस हुए कौन बाय प्रोड्यूस हुए बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्टेकल. यदि कौन सी जगह गोटे ऑब्स्टेकल रहा से जगह आकुमुलेट होगी तुम्हारा रिपल तुम्हारा करंट रिपल प्रोड्यूस. तो माइग्रेशन बेले कौन हुए फास्ट रिपल सेडिमेंट्स विल क्लाइंब टू द क्रेस्ट. ग्रेजुअली से कौटी क्लाइंब कर. तो जिते तुम कौन सी गोटे कि उचालिया जगह थी कि स्लोपी जगह थी तापर सेडिमेंट गुरा कौन धीरे धीरे इरोड होगी जाकि क्रेस्ट रे डिपोजिट है. तो ये जगह सब जगह जाकि डिपोजिट है. तो सब बेले गोटे डिपोजिशन एंगल था कहते एंगल ऑफ रिपोज. कौन कहते एंगल ऑफ रिपोज. So angle of repose means the angle at which the sediment will deposit. तुम यदि बाली देखियो बाली गदा करे गोटे जगह किसी भी समय भीतर तुम्हें बाली पकाउथो ऊपर से तळु खस जाउ तापर तो सेति की एंगल तुम ताको डिपोजिट कर पारो. तुम यदि बाली टिके कि पानी पके दबो ताले कादुओ वेट हे गेले से अधिक हाइट पता रही पारिबो. तो पूरा एमती कि जो एंगल ऑफ डिपोजिशन 90 डिग्री एंगल भी से तुम ताको बाली को रखि पारिबो किंतु सुखला बाली को रखि पारिबो. सो सेटा डिपेंड करछि तांकर एंगल ऑफ रिपोज ऊपर. जरा सेडिमेंटर कैरेक्टरिस्टिक कि जदि तुमरा कोर्सर सेडिमेंट अच्छे अधिक एंगल डिपोजिट हो पारो केते एंगल के डिपोजिट हो तो एंगल ऑफ रिपोज. एटी जेहेतु आम रिपल कथा कहूँ रिपल मोस्टली सैंड साइज पार्टिकल ले प्रोड्यूस हुए. तेणु ये जिते एटा जो टॉस साइड से धीरे धीरे माइग्रेट करके क्रेस्ट रे डिपोजिट हवा जदि एंगल ऑफ रिपोज बढ़िला ताले ये ली साइड आड़ को कौन करिवो स्लीप करिवो. ली साइड आड़ को एमती स्लीप कर. तो ये गोटे डिपोजिशन हवा along the lee side. along the lee side डिपोजिशन हवा inclinedly. along the lee side कौन डिपोजिट हो inclinedly डिपोजिट. सेम प्रोसेस पुणी कंटिन्यू हवा पुणी सेडिमेंट एटी डिपोजिट हवा पुणी एटा चलियो. तो ये जो सेडिमेंट गुरा धीरे धीरे एठू डिपोजिट हेकी जाउछन्ती जो सेडिमेंट गुरा ग्रेजुअली एठू कौन होछन्ती डिपोजिट होछन्ती. ए रिपलटा भी धीरे धीरे कौन होछि याडे माइग्रेट करछि. रिपलटा भी कौन होछि धीरे धीरे शिफ्ट करछि. जोड़ा ड्यून शिफ्टिंग देखछ रिपल भी समते शिफ्ट होछि. तो शिफ्ट हवा सहित तो एमती जतले शिफ्ट हवा सहित ठीक गोटे एंगुलर डिपोजिशन होछि ताको हमें फोरसेट बेड कहउछन्ती. ता सहित तुमे टॉप सेट बेड भी पाइजबा बॉटम सेट रे डिपोजिट. तो एमती नै कि तुमर कोन प्रोड्यूस हो क्रॉस बेडिंग प्रोड्यूस हो ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ द रिपल और ड्यून माइग्रेशन हो कि रिपल माइग्रेशन हो ताजु से आम कौन थी फोरसेट बेड रो डिपिंग डायरेक्शन जुआड़े थाए से डायरेक्शन में करंट फ्लो करता. एंड एटा डिपेंड करे कि रिपल क्रेस्ट को भला अछि. रिपल क्रेस्ट को भला अछि. रिपल धर तुम एमती करछुंदी आमे एना धर रिपल हला गोटे ठीक अछि 3D रे देखले एमती हबो ठीक अछि. तो ये जो क्रेस्ट ऑफ द रिपल अच्छे
ए क्रेस्टा सब एमती स्ट्रेट बा शार्प न था जो क्रेस्टा अच्छी से क्रेस्ट कौन हो पार साइनस हो पार एमती हो पार एमती हो पार कर्व हो पारे साइनस हो पारे डिफरेंट टाइप हो पारे तो ये जो रिपल जदि स्ट्रेट थाए तो मोस्टली से गोटे प्लानार क्रॉस बेडिंग प्रोड्यूस करे तुम्हें पढ़ी प्लानार क्रॉस बेडिंग सो प्लानार क्रॉस बेडिंग रे कौन थाए टॉप सेट बॉटम सेट को फोर सेटा इक्वल एंगल मीट करते आपाई हेले क्रेस्टा कौन था दरकार स्ट्रेट थिबा दरकार जदि गोटे स्ट्रेट क्रेस्टेड रिपल जदि गोटे स्ट्रेट क्रेस्टेड रिपल माइग्रेट करूची ताले अधिक चांसेस अछि से गोटे प्लानार क्रॉस बेडिंग प्रोड्यूस करियो कौन करियो प्लानार क्रॉस बेडिंग यदि साइनस हैला ताले से वेज शेप क्रॉस बेडिंग जो तुम्हें बाउंडिंग सरफेस कर्व पाउछ हैला जो ट्रॉ शेप जो बाउंडिंग सरफेस कर्व पाउछ कि वेज शेप पाउछ सेगुरा सब साइनस कंडीशन रे आसीबो सो एडा हला तुमरो रिपल माइग्रेशन जोटुकू तुम्हें एक्सप्लेन कर पारिबो इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यून फॉर्मेशन में तुम्हें एक्सप्लेन कर पारिबो then comes to tomorrow bed forms in a fluctuating current condition माने गोटे प्लेस एमती भाव जो प्लेस रे किछि दिन किछि समय पर्यंत स्टैग्नेंट वाटर रहउथो किछि ना समय पर्यंत रनिंग वाटर रहउथो जोटा कि हमर टाइडल फ्लैट रीजन कोडा टाइडल फ्लैट रीजन जोटा हाई टाइड कंडीशन आसीबो तर कि टाइड रीजन अछि तो गोटे पर्टिकुलर सपोज रो इटी हमर कोस्ट हैला हैला एडाला तमरा ओशन मोर हाई टाइड होची एति पॉइंट आसुची कोडा एटा हाई टाइड वाटर रीजन एटा धरा लो टाइड वाटर रीजन लो टाइड वाटर कहबे तो जते बेले लो टाइड हबो एति पार्ट एक्सपोज करबो एतले हाई टाइड हबो एति पार्ट सबमर्ज्ड करबो यदि एठी कोनोसी डिप्रेस रीजन रहला एटा डिप्रेस रीजन रहला अदर पानी अछि हाई टाइड बेले आपर पानीटा फ्लो करिक जीवो हाई टाइड ऊपर कौन जीव हाई टाइड हेले पानीटा ऊपर फ्लो करी केती बाट पहुंच जीव पुणी हाई टाइड दे छाड़ियो पानीटा पळे आसीबो तो जेती पर्यंत लो टाइड कंडीशन रहिबो सेती पर्यंत ए जगहटा कोन रहबो स्टैग्नेंट रहबो कोन रहबो वाटरटा गोटे पोखरी भड़ा रहबो पानी रे जोळा पोखरी रे जोळा पानी रे सेवळा रहबो स्टैग्नेंट कंडीशन रहबो जरो धरो तुमे भाबा जे कि नईटे जाउची नईर जो पूरा टोटल थ्रू आउट द वैली तो पानी न थाए ना पूरा मझिरे पानी जाउथे देखियो साइड रे गोटे गोटे जगह रे किछटा वाटर बॉडी रही जाई थाए से वैली भीतर हैना तो सेतरे तुमरो जदी देखिबा सेती डिपोजिशन तुमे अलगा पाइबो जोटी रनिंग वाटर अछि सेती डिपोजिशन अलगा पाइबो तो गोटे रीजन जोटा कि मोस्टली इटा टाइडल रीजन ही कंसीडर करा जाय अंडरगोइंग फ्लक्चुएटिंग वाटर कंडीशन माने कोन बोथ running water condition and stagnant water condition both running water condition and stagnant water condition so iti tumar asba both running water and stagnant water condition jodi both condition asila tale they produce three types of bedding तीन टाइप रो bedding produce करंती हम कहते वेवी बेडिंग फ्लैशर लिखा है फ्लैशर बेडिंग बात में फ्लैशर लैमिनेशन लिख पार और फ्लैशर बेडिंग लिख पार क्या लिख पार फ्लैशर बेडिंग वेवी बेडिंग lenticular bedding placer bedding wavy bedding and lenticular bedding so we have three type of bedding placer wavy lenticular so hame कहले दीटा कंडीशन गोटे रनिंग वाटर कंडीशन गोटे होची स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन so रनिंग वाटर कंडीशन ने मन रखबो सैंड डिपोजिशन हबो स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन ने प्रोड्यूस डिपोजिट हबो क्ले ता माने जदी तुमे अल्टरनेटिवली से जगह रे किसी समय स्टैग्नेंट पाइलो पुणी किसी समय रनिंग पाइलो पुणी किसी समय स्टैग्नेंट पाइलो किसी समय रनिंग पाइलो ताले कोन पाइबो तुम अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ सैंड और मड डिपोजिशन पाइबो अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ सैंड और
मड डिपोजिशन पाइबे। सो से कंडीशन रे जदि अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ सैंड डिपोजिशन पाउछ ताले केते समय स्टैग्नेंट रहउची बा केते समय रनिंग रहउची ता पर डिपेंड करे कि के कार परसेंटेज अधिक हो। जदि मोर रनिंग वाटर बा रनिंग कंडीशन अधिक अछि रनिंग वाटर कंडीशन जोठी थियो माने सिटी सैंड डिपोजिशन हो सिटी मड डिपोजिशन हे परिबो नाही। तुमे नले नॉर्मली पोखरी को जाओ सिटी कादो पाइबो काना हेटी होजे स्टैग्नेंट वाटर तुमे नई को जीवो सिटी तुमे बाली पाइबो सेटा होजे रनिंग वाटर। तो जदि तुमे अधिक समय स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन रहउची ताले मड परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन सैंड परसेंटेज। In that case it is called as your lenticular bedding. More percentage greater than sand percentage. से केस रे तुम कौन कहबो ताको आमे कहबा lenticular bedding। ता माने तुमे कंप्लीटली जदी देखिबो ताले यदि कंप्लीटली एटा को डार्क करबा तो डार्क कलर ता हमर मड को रिप्रेजेंट करबो ता भितरे किछिटा तमे जो व्हाइट पैचेस पड़ा पाइबो ताको कहबो लेंटिकुलर कौन है लेंटिकुलर तेटा इंडिकेट करछु जे जो जगह रे डिपोजिशन होची से जगह रे स्टैग्नेंट कंडीशन ता बहुत अधिक समय पर्यंत रहउची एंड मोरा रनिंग वाटर कंडीशन बहुत कम समय रहउची। एतमे तुमे मड भितरे सैंड रो डिपोजिशन किछरा पाइ। यदि वेवी बेडिंग होची ताले तुमे मड परसेंटेज बी इक्वल टू सैंड परसेंटेज माने 50% में मड हेले 50% सैंड पाइबो एटा इज तुमरो वेवी बेडिंग। और फ्लेशर बेडिंग हेले तुमरो इसलिए उल्टी जो सैंड परसेंटेज बी ग्रेटर देन मड परसेंटेज जोटा को हमें देखै परिबा कि तुमे कंप्लीटली जदि व्हाइटर पार्ट को सैंड खोज छोट छोट तुमरा मड लेयर एमति पाइबो एटा इज कोन फ्लेशर बेडिंग। सो तीनटा टाइप रो में बेडिंग पाइबा गोटे लेंटिकुलर बेडिंग गोटे वेवी बेडिंग गोटे फ्लैशर बेडिंग। लेंटिकुलर बेडिंग जोटी की मड परसेंटेज विल बी ग्रेटर देन सैंड परसेंटेज। वेवी बेडिंग जोटी की इक्वल परसेंटेज रहइबो एंड देन योर फ्लैशर बेडिंग जोटी सैंड परसेंटेज ग्रेटर देन मड परसेंटेज। बुझ पाइला। सो एटा हला तुमरो फ्लक्चुएटिंग करंट कंडीशन। सो नेक्स्ट जिबा अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर called convolute bedding. Bedding or you can say lamination. The thickness of the bed is less than 1 centimeter. It is called as your lamin. So convolute bedding means very simple. You can say when bed folded into smaller anticline and syncline like this you can say the bed are folded into these are called fold and the reeds you can say those are anticline and the brace is called as syncline. So this is your convolute bedding where each bed you can say they are folded into smaller anticline and syncline. So the intensity of folding you can say increases upward as you go upward. Intensity of folding increases. So यदि कौन सी सेडिमेंट गोटे अच्छी तारे लिक्विफाइड सेडिमेंट माने ते कादुओ भला सेडिमेंट तो जदि से कौन सी स्लोप रे फ्लो करथो है यदि लिक्विफाइड सेडिमेंट अच्छी यदि कौन सी स्लोप रे से फ्लो करूची ताले ड्यूरिंग फ्लो ता भितरे बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मोर कादुओटा गोटे बहुत स्लोप रे फ्लो करथे धीरे धीरे एमति जाई एमति कौन सी बेंड हे जिवो कोन हे जो ठीक अछि धीरे धीरे एमती बेंड हो इरेगुलारली बेंड हो सब किसी हो जाए ताको तुम सेन सेडिमेंटरी फोल्ड बोली कहि परिबो ड्यूरिंग तुमरा डिपोजिशन एटा होउछ है ना बा हमें गोटे टर्म एठी यूज करबा सब बळे मन रखिबा और टर्म यूज करा कोन पिनी कंटेम्पोरानियस
pini contemporaneous means very shortly after deposition of bed formation ना बहुत कम टाइम पर कहना गोटे अच्छी प्री गोटे अच्छी पोस्ट प्री पोस्ट मझिरे आसो पिनी कंटेम्पोरानेस जस्ट वेरी शॉर्टली आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द बेड एटा भी सेवड सो एटा कम पाई प्रोड्यूस हुए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ liquefied sediments you can say liquefied sediments जो तुम मास वेस्टिंग हुए कि सही टाइम रे भी तुम हो पारे पूरा flowing along a slope. So plastic deformation of you can say liquefied sediments flowing along a slope and it is because of gravity. Gravity जो से माने flow करते हुए तो during flows माने कहाँ पे folded है जी ताको कौन थे हमें convolute bedding तो intensity increase करे upward. So convolute bedding तुम्हें सब को जगह पाइबो जो जगह रे तुम्हारा slopy condition थी तो तुम्हें alluvial fan रे पाई परिबो. You'll find at near alluvial fan. You will find near your turbidity current. Turbidity current जोटा कहूतले तुमको turbidity current होची जोटा current बा water mixed sediments जोटा कि flowing along a slope. तो continental slope region रे से माने slope region ने flow करी कि नेगी deep sea बा continental rise रे deposit होते. तो तुम्हारा turbidity sequence रे पाइबो. Turbidity current जेतेबे plainland को आसे सेठी deposit हुए डिपोजिट हेले ताको हमें टर्बिडिटी सीक्वेंस बोली कहते हमें पढ़िबा ताको बोमा सीक्वेंस बोली कहते. सो बोमा सीक्वेंस रा बेस रे पाइबो तो एठी तुमे आको को जगह रे पाइबो टर्बिडिटी सीक्वेंस रे पाइबो नियर alluvial fan पाइबो alluvial fan रे पाइबो तुमे डेल्टा रे पाइबो डेल्टा रे हमर फोर सेट बेड टॉप सेट बेड फोर सेट बेड बॉटम सेट बेड अछि तो सेठी तुमे पाइ परिबो. तो तुम्हें आपको पॉइंट बार डिपोजिशन भी पाई परिबो पॉइंट बार रीजन रे तो ये सब रीजन है तुमको कन्वोल्यूट बेडिंग मिले. तापर आसीबा तो एगुरा हमें डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर बोली कहि परिया कोन कहि परिया डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन जो होछ और अनदर स्ट्रक्चर इज जो फ्लेम स्ट्रक्चर. सो फ्लेम स्ट्रक्चर कौन. So it is a structure producing in sand and mud layer where you can say tongue shape mud intrude into the overlying sand layer. तब देखिए और ये जो मॉड पार्ट था इट इज इंट्रूडेड इनटू द सैंड लेयर. तो ये कंडीशन ने प्रोड्यूस हुए व्हेन सैंड लेयर डिपॉजिटेड ओवर मॉड लेयर जो कि मॉड लेयर हैविंग लो डेंसिटी देन द सैंड लेयर. मॉड लेयर कौन थो लो डेंसिटी थो देन सैंड लेयर तेणु करी मॉड लेयर टा कौन करिवो जार लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी रे जोड़ा कि जो जिन तुम कि वाटर देख जब हाई डेंसिटी अच्छी भर कौन लो डेंसिटी भितर पके मैंने से ऊपर को उठा चेष्टा कर तो मॉडर जेहेतु लो डेंसिटी थाए से कौन करे इंट्रूड कर जाए सैंड लेयर ताको हम कहती फ्लेम स्ट्रक्चर. तो इट प्रोड्यूस एट द बेस ऑफ द बेड इट इज फाउंड कह पार एट द बेस ऑफ द बेड. बेड रो बेस रे मिले कहना एटा होची तुमर सैंड लेयर रो बेस बाय इंटरफेस तुम कहि परिबो से जगह रे मिले तो इट फाउंड एट द बेस ऑफ द बेड. इट इज आल्सो अ डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर कोन कहबे डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर. सो समटाइम्स तुम द क्रेस्ट ऑफ द टंग और फ्लेम तुम कहि परिबो दे बेंड टुवर्ड्स द करंट फ्लोइंग डायरेक्शन. सो यू कैन से समटाइम्स the crest of the intrusion
bend towards the current flowing direction. So किसी समय तुम्हारा current flowing direction को bend करता है, so it can weakly represent the current flowing direction. Sometimes it can take, but it is not a good pile current indicator. Right. So basically it produce when sand will find sand deposition over a less dense mud deposition, then mud layer will intrude into the sand layer. Mud layer का sand layer को intrude करिवा, intrude कले जितने sand layer ऊपर pressure पकेवा अधिका ताले mud layer टा कौन करता है वितरो intrude कर intrude कले you will find this type of structure. It is called as your flame structure. In same scenario, mud and sand, you will get different type of structure under different circumstances. Different circumstances से different type of structure पाइबो है ना, तेनु minute differences ही mark करियो. Next structure is हमें ball and pillow structure. So ball and pillow structure is also a deformation structure. Ball and pillow structure is also a deformation structure. It produces same condition where sand deposited over the mud layer. Sand deposited over the mud layer. So here, but the mud layer is relatively more denser or denser than previous condition. Previous condition एटा कौन था अधिका denser था. तो इटी कौन हुए तुम्हारा ball and pillow shape sand detached from sand layer and deposited along the bedding plane मोर किछरा सैंड तुमर बॉल और पिलो शेप रो किछरा डिटैच करबे त बेडिंग प्लेन डिपोजिट हेबे और किछरा सिंक भी कर जंते मड भीतर जदी मडटा अधिक डेंसर थिबो दैन द सैंड है ना नी मड जदी अधिक डेंसर थिबो ताले ता भीतर कोन हेबे माने सिंक कर जबे सॉरी सैंड ता जदी अधिक डेंसर थिबो ताले समान ता भीतर कोन करबे सिंक कर जबे हला. सो जेतबे एटा कोन पय हुए बिकॉज़ ऑफ लिक्विफिकेशन of sand layer from mud layer. तुम यदि mud layer को अधिक compress करे mud layer को अधिक compress करेबा ताले mud रे कोन थाए अधिक water content थाए तुम mud को अधिक चापिले तो पानी भागे तो पानी भाले से कुआड जो ऊपर को जिवो काना एठी तुमे compress करियो माने आर pore space कम हो जो pore space कमिले capillary reaction रे जा water रे ऊपर को उठे तो पानी जेतले ऊपर को उठिबो तो mud layer कोन करिवो it will liquefy the sand layer हला. सो एठी कोन पाई प्रोड्यूस हुए when mud layer liquefy the sand layer. Mud layer जेतले liquefy करे sand layer mud layer यदि sand layer को liquefy करियो ताले तुमर बॉल और पिलो शेप रो सैंड सब डिटैच हेबे एंड से माने बेडिंग प्लेन डिपोजिट. इट इज आल्सो अ स्ट्रक्चर दैट फाउंड form along the bedding plane. Bedding plane माने तुम्हें bedding plane को form of the bedding plane को at the base of the bed को सब same जिन्स base of the bed को at interface of bed को सब same meaning करछ है तो एटा base of the bed रे प्रोड्यूस हुए दास तुम्हारा कौन बाय प्रोड्यूस हुए बिकॉज ऑफ लिक्विफिकेशन जो प्रोड्यूस हुए. कम्स टू डिश एंड पिलर स्ट्रक्चर. सो डिश एंड पिलर स्ट्रक्चर फर्स्ट थिंग दे फाउंड एसोसिएटेड विथ ईच अदर. दे फाउंड एसोसिएटेड with each other or you can say found in association. So this structure it is found in disc shape along the bedding plane. So it is you can say disc shape along the bedding plane
and pillar is columnar structure. Pillar is columnar across the bedding plane. So ethi tumara these and pillar structure are called as dewatering structure. Dewatering structure. Dewatering माने से सेम जिनस वाटर एक्सपेल करी तो कौन सी बेड अच्छी हमर एठी बेडिंग प्लेन अच्छी बा बेड डिपोजिट है जिते वाटर एक्सपेल करिवो तो कौन सी बेड रे वाटर एक्सपेल करछि ताले इट विल राइज अपवर्ड से ग्रेजुअली कोन अपवर्ड राइज करिवो थ्रू फ्रैक्चर प्रेजेंट विद इन द बेडिंग प्लेन तो ये जहाँ फ्रैक्चर प्रेजेंट अच्छी ता थ्रू रे जिते मूव करे सपोज जिते बड़े लिक्विफिकेशन होची से माने प्योर वाटर नुहते ता सहित किछि ना किछि तुमरा सेडिमेंट मिक्स थाए द लिक्विफिकेशन होची कोन तातरे सेडिमेंट मिक्स थिवो तेले सेडिमेंट तातरे मिक्स थाए सेडिमेंट पियरिंग वाटर तो डिवाटरिंग कोन पय हबो कोन जगह प्रेशराइज हे गला कोन जगह रे कि वो अर्थक्वेक वेव आसला किछि भी हैला तो डिफॉर्मेशन ताकू कहि परिबा हमें जा थ्रू रे वाटरटा रिलीज हैला पारे ता सहित किछटा सेडिमेंट से कौन कर ग्राजुअली ऊपर को जीव धर ये ऊपर को गला बेले ये जगह आउ ताको बाट मिलला नाही so it will not get fracture to move upward so it will deposit here and also deposit some will deposit at the bedding plane kana bedding plane weak plane से जगह रे तुमको स्प्रेड कर परबो एठी देले ऊपर को फ्रैक्चर ताको न मिलिबो तन एठी भी स्प्रेड करबो एठी भी डिपोजिशन हो एठी भी डिपोजिशन से पे हमने एसोसिएटेड एक मिलत फाउंड इन एसोसिएशन विथ ईच अदर so जितने तुम्हारा sediment bearing water that move upward through the fracture of the bedding plane then some deposit along the fracture which is you can say it will transverse to the bed and some deposit along the bedding plane which is your D structure so that's why D structure and pillar structure also come under deformation structure I mean deformation structure under as mostly these are dewatering structure तमरो convolute bedding flame structure ball and pillow structure dish and pillar structure there are सब जगह deformation structure produced by deformation when it comes to imbrication structure so imbrication it is a type of structure where the pebbles and cobbles type of sediments they incline in the current flowing direction they incline in the current flowing direction so pebbles or you can say cobbles inclined in the current flowing direction so देखो एगुरा सब pebble जोरा current flowing direction में inclined है the condition is that their long axis should be parallel to each other so long axis of pebble parallel to each other then the pebble they deep towards upstream direction pebble deep towards upstream direction so if this is our upstream this is our downstream the pebble gura deep करछन कोड upstream they tilted towards the current flowing direction को tilt करंती and upstream आड़ को deep करंती their long axes are parallel to each other that's why they are used as paleo current indicator तुम्हें जीव कौन सी झरणा पाखे देख पेबल गुरा एमती बेंड हो पड़ी था तुम नजर कर न थके गले नजर कर जो आड़ को देख पानी फ्लो कर से आड़ को से बेंड था कि पानी भीतर तो देखा हुए से गुरा ना तुम देखा जे पेबल गुरा से डायरेक्शन सब बेंड थे ताको आम कहते योर इम्ब्रिकेट स्ट्रक्चर तो कहते इम्ब्रिकेट स्ट्रक्चर इट इज ऑल्सो ए डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर यहाँ गोटे कौन डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर सो देन कम्स टू लोड कास्ट
सो लोड कास्ट फास्ट मोर कास्ट टर्म आम जो यूज करते सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर आम कास्ट टर्म यूज कर इंडिकेट करे कि गोटे जगार इरोजन जो डिप्रेशन हम तापरे जितेबले फ्लोर फ्लो वेलोसिटी वीक हो से जगटा पुणी डिपोजिशन हो ये टर्म कहवा इरोजन एंड बैकफिलिंग इरोजन एंड सब्सिक्वेंट बैकफिलिंग टर्म आम कास्ट पे यूज कर बट लोड कास्ट इट इज ए डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर एटा कौन इट इज फर्स्ट थिंग इट इज not a true cast. In a true cast में it is formed by deformation. Deformation जो प्रोड्यूस हुए सिमिलर क्लेस से तुम्हें पाइबो जदि सैंड लेयर अच्छी मड लेयर अच्छी बा सिल्ट लेयर अच्छी तो यहाँ तुम्हें नहीं पार सिल्ट और क्ले लेयर एटा हमें मड लेयर लिखा सॉरी सैंड लेयर लिखा सो इटी तुम्हारा द ओवरलाइंग सैंड लेयर विल शो बल्जिंग टुवर्ड्स द silt or clay layer. So you can say overlying layer so bulging or you can say overlying layer bulges to the lower layer. कौन पाई हुए because of density difference कौन पाई हुए because of difference in density difference कोटा तुम्हारा सैंड लेयर है जो हाई डेंसिटी एटा हाई डेंसिटी एटा लो डेंसिटी आज हुए तो ये सिल्ट एंड क्ले लेयर तुम रैपिडली बरियल होती एटा कोड प्रोड्यूस हुए रैपिड बरियल कंडीशन कौन यदि सिल्ट क्ले लेयर सडनली रैपिडली बरीड हो विदाउट कंपैक्शन यदि कौन जगह रैपिड सेडिमेंटेशन अच्छे तो सिल्ट क्ले लेयर रैपिडली बरीड हो गले विदाउट कंपैक्शन ताले एमानकर डेंसिटी लो ता ऊपर जो पुणी डिपोजिशन हम से ओवरलाइंग लेयर विल नॉट गेट इक्वल प्रेशर से सब जगह इक्वल प्रेशर पाइब ना ये कौन कर बल्ज कर तल लेयर को बल्जिंग देखेब ताको आम कहते लोड कास्ट बिकॉज ऑफ लोडिंग हो धर कि आम पकार चली जाऊँ पका रीजन अच्छे चली जाऊँ तुम्हें सब जगह को तुमको पाद को इक्वल प्रेशर मिलूँ तुम्हें किसी पका जगह किसी कादुआ जगह थी भितर पका जगह तुम जो इक्वल प्रेशर जी प्रेशर मिलला कादुआ जगह से प्रेशर मिल तुम कौटी धसीज ना बल्ज जोड़ा कहते कि तौक माने सैंड लेयर कौन हम बल्जिंग कर आम कहते लोड कास्ट सो लोड कास्ट इज ए डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर so most importantly it is not a true cast produced by same density difference कर परिबो बा competency difference हमें टर्म यूज कर परिया कौन competency difference जो भी तुम्हें यूज कर पारो टर्म तो आज जो प्रोड्यूस हुए समय कौन गला फास्ट तुम कन्वोल्यूट बेडिंग फ्लेम स्ट्रक्चर बॉल एंड पिलर स्ट्रक्चर डिश एंड पिलर स्ट्रक्चर तापर इम्ब्रिकेशन स्ट्रक्चर एंड लोड कास्ट ऑल आर अंडर डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर नेक्स्ट आम जा इरोजनल स्ट्रक्चर को आसो फास्ट लिखा ग्रुप कास्ट so these are you can say linear elongate series type of deposition aligned parallel to the
करेंट फ्लो यदि आम देखा ताले सिंपल सेटा कौन पाई प्रोड्यूस हुए इट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इरोजन एंड बैकफिलिंग तो कास्ट जेहेतु आसुची एटा कौन पाई प्रोड्यूस हुए फास्ट इट प्रोड्यूस बाय इरोजन एंड सब्सिक्वेंट बैकफिलिंग इरोजन एंड सब्सिक्वेंट बैकफिलिंग जो एटा प्रोड्यूस हुए फास्ट कौन हम सपोज दिस इज अ सरफेस जोटा कि गोटे कोहेसिव सरफेस माने क्लेई सरफेस सो आ ऊपर करेंटा फ्लो कर करेंटा फ्लो करुच्ची तो आप करेंट फ्लो कर तुम्हें कौन सी कादुरे टी बाड़ी में गोटे गार टाणी देव तार कौन हम गोटे लंबा डिप्रेशन प्रोड्यूस हम तुम्हें गोड़े भी टाणी दिव भी लंबा डिप्रेशन गोटे प्रोड्यूस हम तो आम जदि कौन सी कोहेसिव सरफेस पर करेंट फ्लो करेंट सहित सेडिमेंट अच्छी यदि कौन सी सेडिमेंट इट ड्रैग्ड ओवर ए कोहेसिव सेडिमेंट इट प्रोड्यूस ए डिप्रेशन कौन प्रोड्यूस कर गोटे डिप्रेशन प्रोड्यूस कर सो फास्ट कौन हुए ए डिप्रेशन linear depression you can say a linear elongate depression will produce a linear elongate depression will produce when any you can say pebble or wooden fragment being dragged over a cohesive sediment यदि कोहेसिव सेडिमेंट उपरे कौन सी पेबल हो कौन सी अदर ऑब्जेक्ट हो यदि तुमरा ड्रैग ही गला तुम्हें कह पार क्रीपिंग एक्शन हो कि ड्रैगिंग एक्शन हो जो प्रोड्यूस है से फास्ट प्रोड्यूस कर गोटे रीच सॉरी डिप्रेशन गोटे प्रोड्यूस जो ड्रैगिंग हो तो से जगह करेंट फ्लो रो अधिक वेलोसिटी थी तो से ड्रैगिंग हम इट विल प्रोड्यूस डिप्रेशन तो जो करेंट वीक हो दिस डिप्रेशन विल फिल बाय सेडिमेंट कहते कौन सब्सिक्वेंट बैकफिलिंग तो ये जगह कौन हो गोटे रीज भाया जगह कौन गोटे रीज भाया तो जिते करेंट वेलोसिटी विल डिक्रीज दैट डिप्रेशन दैट एलोंगेट डिप्रेशन विल फिल्ड and produce a ridge type of depression so feel egala oda ridge type of depression egala and that ridge will aligned parallel to the current flow को parallel haba se current flow direction dekheba current flow को align se haba but it cannot show the current flowing direction and jehetu it a linear depression produce hochi it is believed that it is produced by laminar flow eta kam hai produced by laminar flow kana laminar flow रे कोन एमती elongate लंबा depression हे परिबो turbulent हेले कोन हबो डिप्रेशन टा इरेगुलर हे परिबो सेन पे इटा कोआ जाय इट इज प्रोड्यूस्ड इन ए लामिनार फ्लो कंडीशन इट इज ए ट्रू कास्ट एटा गोटे ट्रू कास्ट कहि परिबो काना एठी कोन हला फास्ट इरोजन हे कि डिप्रेशन हला परे करंट वीक हला परे पुनी फर्दर ता परे सेडिमेंट डिपोजिट हला तो एटा होची इरोजन एंड सब्सिक्वेंट बैकफिलिंग कंडीशन तो जो केतक तुम ग्रुप कास्ट आसती जोटा पालियो करेंट देखे पारे सो से बड़ा गोटे कहते चेभरन मार्क हाँ चेभरन मार्क सो चेभरन मार्क गोटे थाए चेभरन मार्क इज ए टाइप ऑफ योर ग्रुप कास्ट टाइप कौन थाए ग्रुप कास्ट थाए जोटा भी शेप रही है कौन थाए भी शेप होता है जोटार भी पॉइंट डाउनस्ट्रीम बीटा कुआडे पॉइंट करता है डाउनस्ट्रीम बाड़ू पॉइंट करता है तेणु चेभरन मार्क जोटा इट इज यूज्ड एज पालियो करेंट इंडिकेटर सो आम ग्रुप कास्ट को यूज कर परिबा बिकॉज ऑफ इट वी शेप तार वी शेप जो आम ग्रुप कास्ट को पाइलो करेंट इंडिकेटर हिसाब से यूज कर ठीक अच्छे किंतु तुम
सॉरी चेव्रन मार्क यूज कर परिया ग्रुप कास्ट को तुम यूज कर परियो ना चेव्रन मार्क तुम यूज कर परिबो बिकॉज ऑफ इट्स v शेप where the v point towards the downstream direction